One day, Mintu was having a stroll in his backyard and he caught some bugs. He brought them inside and he showed those bugs to his father. His father was quite shocked and he asked him, "Why did you catch them?" He told, "I was in school and my teacher said yesterday to catch a bug. So that's why I brought them." His father understood. His father told, you know, catch a bug means something else. It never means like you are going to catch a bug. Catch a bug का मतलब हो जाता है कि जब आप किसी वायरल डिजीज को पकड़ लें, कोई बीमारी हो गई और आपने एक वायरल डिजीज को पकड़ लिया, तब हम वहां पर ऐसा बोलते हैं, यू कॉट अ बग, यू हैव गॉट फ्लू, you have got stomach bug. So his father made him understand. Like catch a bug means to catch an illness, especially a flu. Flu को आपने catch कर लिया. So you caught a bug. But फादर ने समझाया कि बग के और भी काफी सारे मीनिंग्स हो जाते हैं. बग को काफी तरह से इंग्लिश में यूज किया जाता है. Sometimes you say, my phone is buggy. When your phone is not functioning well, it's not working well. जब आपका फोन एक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो भी आप उसको ऐसा बोल पाते हैं, my phone is buggy. बग से buggy बना लिया. There is a bug in it. Yes, यानी कुछ है जो इसको हैंग कर रहा है, जो इसको काम नहीं करने दे रहा है. वैसे कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी आप बोल पाते हैं, my computer is buggy. There is a bug in my computer. And sometimes you say to the people when somebody is annoying you, somebody is making you feel annoyed, somebody is making you feel worried, somebody is worrying you. Okay, please, stop bugging me. Who bugs you? What bugs you? So then people say, no, it bugs me when I talk about or when I think about my future. It bugs me, it worries me. तब लोग वहां पर ऐसा बोलते हैं कि ये मुझे चिंता में डालता है, ये मुझे ना वरी करता है. सो इट वरीज मी, इट बग्स मी, वहां पर ऐसा बोला जाता है. एंड समटाइम्स यू से माई रूम इज बग्ड. जब आपके रूम में कोई आपकी बात को, कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए कोई एक डिवाइस, माइक्रोफोन लगा देता है और जिससे आपकी बात रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है या वो कहीं और आपकी बात को सुन पाता है, तब आप ऐसा बोलते हैं, माई रूम इज बग्ड. समबडी हैज बग्ड माई रूम, या माई फोन इज बग्ड. समबडी हैज बग्ड माई फोन. किसी ने मेरे फोन में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मेरा कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रहा है या जिससे मेरी बात कहीं और पहुंच पा रही है. माई फोन इज बग्ड, माई रूम इज बग्ड, माई कार इज बग्ड. When somebody makes you feel uncomfortable, somebody makes you feel nervous regarding something, you say, please don't bug me out here. It makes please don't bug me out. It bugs me out. You always bug me out. कैसे करेगा, क्या होगा, तेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहा है, कैसे पास होगा. प्लीज स्टॉप बगिंग मी आउट, डोंट बग मी आउट. मुझे आप कंफर्टेबल फील कराएं, मुझे अनकंफर्टेबल फील ना कराएं. सो डू यू बग समबडी आउट और समथिंग बग्स यू आउट? कुछ भी ऐसा है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है. इज देयर समथिंग दैट बग्स यू आउट? मिंटू ब्रॉट सम बग्स टू शो those bugs to his father. Father told the name of each bug. Father ने सारे bugs का नाम बताया. This is centipede, this is caterpillar, this is firefly, this is a cockroach, this is a spider, this is ladybug, this is grasshopper, this is cricket, this is earthworm. So he told all the names, सारे names उसको गिनाए. At last he was happy to know the meanings of bug and to know the names of each bug. वो खुश था. So I hope you must have liked the video, and if you have liked, you can share and subscribe to the channel. You can share the video with the people. You can subscribe to the video. Thank you.